हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर फाइन। कैसे आप सब लोग? फूड सेफ्टी से हवाले से नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, मॉड्यूल 1 है। इसका टोटल जो है हमारे पास 3 मॉड्यूल हैं, यानी कि 2 मॉड्यूल हैं। ठीक है। एक मॉड्यूल हैसब का है, HACCP, और एक मॉड्यूल फूड सेफ्टी एंड फूड हाइजीन का। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल you'll be able to describe what food contamination is, and the most common explanations for food contamination. Identify ways in which food contamination can be prevented. List the 4 critical steps of food production to reduce the risk of food contamination. Discuss the main foodborne illnesses and how they may affect us. Explain the most common source of foodborne illnesses. List some allergic reaction symptoms. Describe some of the responsibilities food handlers must implement. आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी एंड फूड हाइजीन। फूड सेफ्टी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम एनीथिंग दैट कुड हार्म अ कंज्यूमर्स हेल्थ। ये फूड सेफ्टी की डेफिनेशन है। फूड हाइजीन की डेफिनेशन क्या है? इंश्योरिंग दैट फूड इज़ फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, इज़ होलसम एंड इज़ फिट फॉर कंजम्पशन। ये फूड हाइजीन की डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, ये आपकी सारी वीडियोज़ हैं। Failure to follow food safety and hygiene procedures can result in the very real risk of harm to the consumer and can potentially damage a business's reputation. It can also lead to a criminal conviction. Remember, good food safety and hygiene practice are required by law. ठीक है, ये एक क्राइम है। अगर फूड सेफ्टी ना हो, एक क्राइम है। कंटामिनेशन क्या है? Food contamination is the presence of unwanted microorganisms or other foreign matter in food. We have all read the horror stories of customers finding unexpected and welcome items in their food, right? Woman finds mouse droppings in a takeaway carton, prison sentence for owner of filthy restaurant, child chokes on plastic found in chocolate bar. These are all examples of food contamination. Contamination can occur at any stage of the food production process. Once food has been contaminated, it is unfit for consumption and so cannot be served to a customer or consumer. Serving contaminated food could result in that customer becoming ill or injured. समझ में आई आपकी बात? यानी कंटेमिनेशन कोई भी चीज़ खाने में आ जाती है, बाल, शीशा या शीशे का टुकड़ा, कुछ भी, वो कंटेमिनेशन कहलाती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। स्पॉइलेज क्या है? फूड स्पॉइलेज occurs when it becomes contaminated with something that is not harmful but still renders it unfit to serve. This could be a hair or other inedible object in the food, or food that has not been stored correctly, resulting in a change to its color, texture, taste or smell. It is often possible to identify food spoilage just by using your senses. Does it smell strange or offensive? ये सवाल है। क्या वो दूसरी तरह स्मेल करता है, टेस्ट अनप्लेजेंट करता है? If the answer to any of these questions is yes, the food should not be served and you must notify your supervisor immediately. अगर आपका फूड ख़राब हो जाए तो सर्व मत कीजिए कस्टमर्स को। अच्छा जी। रीजंस फॉर कंटामिनेशन इन स्पॉइलेज। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? यही रीजंस थे। पुअर टेम्परेचर कंट्रोल, lack of personal hygiene, poorly maintained equipment, cross contamination, improper storage, procedures not followed, lack of understanding, lack of training। ठीक है, ये प्रोसीजर्स हो सकते हैं कंटामिनेशन के। आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन क्या है? थोरो क्लीनिंग करें, चलते रहे साफ कर। मेंटेनिंग इक्विपमेंट, कंट्रोलिंग पेस्ट, कीड़े मार दवाइयाँ, कीड़ों को कंट्रोल करें। पर्सनल हाइजीन ज़रूरी है। Prevention best practices. The key here is to prevent contamination from happening by adopting best practice methods as part of the daily routine. Ensure that all equipment and work areas are properly cleaned according to a set cleaning rota and using rota मतलब उसको कहते हैं schedule को, time table को, to set a cleaning rota and using the correct cleaning products. Ensure that all equipment is regularly checked for defects and worn parts and thoroughly cleaned after use. Take measures to deter pests from entering the workplace by maintaining a clean workplace and conducting regular checks. The biggest threat to food safety is the person handling the food. By maintaining a high level of personal hygiene, you can ensure that you are not part of the problem. Prevention can be strengthened through the further processes of food safety risk assessment and the implementation of effective accident and sickness reporting procedures. आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल। By controlling each step in the food production process, the risk of contamination is kept to a minimum. The 4 steps: receiving, preparing, holding और handling। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Click on the tabs to learn about the 4 control. Receiving goods arrive at the workplace on a daily basis.
By monitoring the quality of those goods, the risk of contamination is minimized. सही है. रिसीविंग से कंट्रोल कर सकते हैं हम, यानी कि क्वालिटी सप्लायर्स एंड इंग्रेडिएंट्स चेक ऑल गुड्स अपॉन रिसीट, रिटर्न और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी डिफेक्टिव गुड्स, चेक दैट ऑल गुड्स मीट द लीगल डिलीवरी टेम्परेचर. ठीक है. प्रिपेयरिंग में क्या है, वाइल्स्ट प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर कंजम्पशन सर्टन क्राइटेरिया मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू मेंटेन सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस. Ensure that correct cooking temperatures are achieved. Use reliable equipment to ensure that those temperatures are accurate. Identify areas of possible cross contamination. Maintain a clean and tidy work area. Holding food should be stored according to its type. Example, raw meat requires refrigeration, most dry goods do not. Holding temperature and time regulations also apply to certain foodstuffs. By adhering to these regulations and practices, the risk of contamination is further reduced. Store all foodstuffs in suitable conditions. Ensure that holding temperatures for both hot and chilled foods are adhered to. Adopt a robust regime of safe storage and stock rotation. Always label stored food. अच्छा, हैंडलिंग कैसे करनी है? Safe handling practices are the last line of defense between food leaving the production area and it reaching the consumer. Practice alongside the other critical steps. Vigilant handling of the food will ensure that it reaches the consumer in a safe and fit state. Maintain meticulous personal hygiene where necessary. Wear gloves. Always wash hands before handling foodstuffs. Keep accurate sickness reporting records. Poor food safety and hygiene can result in a number of outcomes, including poisoning, प्रोडक्ट कस्टमर कंप्लेंट्स, पेस्ट इन्फेस्टेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. समरी क्या है? फूड सेफ्टी मीन्स इंश्योरिंग दैट फूड एंड ड्रिंक्स आर सेफ टू कंज्यूम. फूड सेफ्टी इज एवरीथिंग दैट वी मस्ट डू टू इंश्योर दैट फूड इज सेफ. Contaminated food can cause injury and illness. Spoiled food may or may not be harmful, but is unfit to eat and could result in complaints. Food safety excellence means implementing good prevention and control along every step of food processing and handling. ये जी समरी थी इस मॉड्यूल की. इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मॉड्यूल 2 हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में उससे अगली वीडियो जो होगी वो एग्ज़ाम होगा फूड सेफ्टी का, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.